Bhumika? Can you hear me, Bhumika? Viraj? Yes, sir. Sir, in semi-batch reactor, there is some removal of products, whereas in a batch reactor, there is no removal of products for a certain time. Okay. Is there addition of product, the reactant? Yes, sir. For batch, the feed is fed, and it's the reaction happens or the process happens, and whereas in a semi-batch, the product is removed in between. Okay. And continuous? Both are going on, sir. Input is coming and output is going Good. continuously. In batch, there is no input, there is no output. Simple. No input, no output is batch. If there is input or output, it is same batch. And if there is input and output both, it is continuous. Right? Let's see. So we had seen this yesterday, right? Let's go to the bottom of this thing. Where I can okay. So in batch, no input, semi batch, okay. So in semi batch, there is input or output, one of the two, only one. And in continuous, both input and output. ठीक है समझ में आया लोगों को Yes, sir. So in batch there is no input, no output. In same batch there can be input or output but not both. But in continuous it is both input and output. So this is the difference between batch, same batch and continuous. You should know that. Next we have seen two types of continuous reactors, right? What are the two types of continuous reactors? Who can tell? Devendra? Sir, could you please repeat the question? What are the types of continuous reactors we have seen yesterday? Sir, CSTR or PFR देखा था. Right. So what is the difference between CSTR and PFR? You can tell. Hmm. Who can tell what is the difference between CSTR and PFR? Dikshita?
So there is mixing in CSTR, no mixing in PFR. Right. So it is completely mixed or perfectly mixed, they call it. We're talking about ideal conditions. And no mixing here. That's the primary difference between the two. CSTR will have perfect mixing. That means everything, everywhere, anywhere in the reactor in a CSTR, the concentration will be same. Right. So if I look at CSTR, there's input, there's output. And if I take concentration anywhere in the reactor, concentration is same anywhere in the reactor. Doesn't matter. That is what we're talking about. We're talking about ideal things here. Let me put it. Ideal CSTR, there is no complete mixing. And if you look at ideal PFR, so what we saw yesterday was if I take any layer, any two adjacent layers, there's no mixing between adjacent layers. Right? So concentration here is going to be different from concentration here. समझ में आई बात? So concentration is different in different ones. So if I draw a concentration profile,
If I draw concentration profile for PFR, it will be like this. Okay. The concentration decreases gradually in a plug flow reactor. That's why the reaction will take place at different concentrations in the reactor, and that is why the conversion is higher in a PFR. Whereas in a CSTR, as in a CSTR, what happens if I take the concentration profile what will happen is this is the inlet concentration. And CA naught and CA. So this is CA naught and the outlet concentration something like this. Almost immediately it will drop to CA and then outlet concentration. This is outlet concentration. Oh, sorry, this is CA. So the reaction takes place essentially at the outlet concentration. Any difference between PFR and CSTR? Any questions on difference between CSTR and PFR? हेलो सर वो एक बार टाइम ग्राफ बताओ ना This is CSTR the का reaction time, right? Or time in the reactor. Let's say time in the reactor. You'll see that it is called residence time. Suppose in the reactor it is there for 10 minutes, suppose. तो ये जो initial रहेगा, so within say 1 minute, the reaction will drop to CA and then entire reaction takes place at CA in a mixed flow reactor because it's complete mixing. तो जितना भी add करेंगे हम, because this flow rate, inlet flow rate, is far less than the volume of the reactor. Right? The flow rate रहता है volume reactor से बहुत कम रहता है. That is why the moment the feed enters the reactor here, its concentration reduces or concentration becomes almost reactor concentration, which is CA, which is exit concentration here, and this is inlet concentration, and that is why the reaction takes place at exit concentration, not at inlet concentration. यहाँ पर reaction बहुत कम होगा
मेनली यहाँ पर रिएक्शन होगा ये कॉन्सेंट्रेशन पर। whereas in a plug flow reactor, right, यहाँ पर लेंथ रहेगा बिकॉज इट्स द लेंथ ऑफ द रिएक्टर, ये जो रहेगा in this case length of the reactor is proportional to resistance time. right? इतना टाइम रहेगा यहाँ पर, सपोज ये टाइम है इतना, this is 10 minutes suppose, same thing compared to that one. So this will be CA, this will be CA naught, right? जो हमने देखा था, right? So reaction is taking place at higher concentration than exit concentration, and that is why you get better conversion, more product in PFR compared to CSTR. समझ में आया? सर CA जो है हमारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है ना? यस, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सर फिर आइडियली हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जो है प्रोडक्ट में हमारा 0 चाहिए ना कॉन्सेंट्रेशन? जीरो नहीं होता है, 100% कन्वर्जन वेरी रेयरली होता है। नहीं सर, आइडियली के लिए प्लॉट करते तब। नहीं, आइडियल इज टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू से आइडियल यू आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टर इज आइडियल, नॉट रिएक्शन इज आइडियल, राइट? वी आर सेइंग रिएक्टर इज आइडियल, नॉट दैट 100% कन्वर्जन हो रहा है। 100% कन्वर्जन बहुत रेयरली होता है, 98-98.9% हो सकता है, बट 100% बहुत रेयरली होता है। सर या सर दोनों भी तो किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा यूज करना है? we'll see all those things. अभी तो just initial है, I'm just trying to understand, explain you the difference between CSTR and PFR. ये basic चीज़ है, understand करो, बाकी we'll see later. When to use PFR, when to use CSTR, all those things we'll see later in different units. That's way down the line, but understand the difference because we are going to use this PFR, batch reactor and CSTR in our all the units. Okay, वो आएगा बाद में। Yes, sir. When to use this, when to use that, इंडकॉट करनी, वो सब आ जाएगा, वो करेंगे हम। It's too early to talk about that because it will require some derivations. But conceptually I'm trying to explain कि क्या होता है ये। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, CSTR का मतलब क्या होता है, PFR का मतलब क्या होता है, बैच रिएक्टर का मतलब क्या होता है, because when we talk about these later, when we do the derivations, you should understand it. ठीक है? Is Yes, your sir. question? Any other questions? Anybody? कितने लोग को नहीं समझा ये सब? Raise your hand. सबको समझ में आ गया? अरे वाह, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो लेट्स सी सम some animations or videos I want to show. Let's see कौन सा आता है पहले। सर वो पीएफआर में लेयर्स मतलब नहीं समझा सर। PFR में लेयर्स adjacent layers, ऐसा if you take any pipe, right? PFR is nothing but a pipe. एक पाइप लिया आपने, राइट? आपने फ्लूइड फ्लो किया, राइट? फ्लूइड मैकेनिक्स, FM. When you look at plug flow or rather, when you look at flow in a pipe, right? Suppose this is a pipe, right? Now what will happen? You have input, you have output, right? ठीक है? In this case, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा होगा ना? फ्लो कैसे होता है, बाउंड्री लेयर क्या होता है, क्या नहीं होता है, बताओ ना, याद है किसी को?
फ्लूइड मैकेनिक्स, हाँ सर, वो लैमिनार टर्बुलेंट। लैमिनार टर्बुलेंट होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन लैमिनार टर्बुलेंट वगैरह? सर लैमिनार में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक होता है। ओके, पैराबोलिक का मतलब क्या होता है? मतलब सेंटर पे मैक्सिमम रहती है और फिर वो वेरी करती है जैसे राइट, जैसे वॉल के नियर जाएंगे। राइट। सो इफ यू लुक एट दिस वन, बाउंड्री लेयर पढ़ा क्या आप लोगों ने? बाउंड्री लेयर पढ़ा था क्या फ्लूइड मैकेनिक्स हाँ में? सर। क्या होता है बाउंड्री लेयर? Effect of viscous forces, sir. Yeah, but how is it represented? When I look at पाइप देखा मैंने, ट्यूब देखा, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा इसको मैं? सर वेलोसिटी वेरी करेगा ना सेंटर से वॉल तक। तो कैसा आएगा? ऐसा सर आएगा? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा बाउंड्री लेयर का। राइट, सो एसेंशियली समथिंग लाइक दिस, राइट? यस सर। बराबर है कि नहीं? जी सर। दिस इज योर एसेंशियली, यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, टिल इट रीचेस सेंटर वेलोसिटी, बराबर है? और यस इधर सर। भी रहेगा, इधर भी वैसे ही रहेगा। मैं ज़्यादा थिक बताया, इतना थिक नहीं रहता है, इट शुड बी थिनर देन दिस वन एक्चुअली, दिस इज एन एग्जैजरेशन, so it will be something like this. तो यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, लाइक दैट इट इज द सेंटर का जो वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगा, राइट? नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, राइट? यस सर। राइट, यहाँ पर डिफरेंट है, एवरीवेयर वेलोसिटी इज डिफरेंट एक्सेप्ट मे बी इन द सेंटर, बराबर? When I talk about concentration, I'm talking about these layers. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो concentration है, यहाँ पर different है. I'm talking about now this whole layer. And I'm not talking about boundary. I'm talking about this whole layer. टेढ़ा हो गया वो, right? If I take two layers, adjacent layers, तो यहाँ पर जो concentration रहेगा, यहाँ पर जो concentration रहेगा, different रहेगा. Just like fluid flow, यहाँ पर velocity लगे, यहाँ velocity है. Similarly, I'm extending the same concept to the entire layer. Concentration will be different, and there is no mixing. बोला था no mixing in the plug flow reactor. That means ये जो layers है, this layer is not mixing with this layer. तो ये हमने यहाँ पर कहीं पर impeller नहीं डाला है. We did not put any impeller, right? यहाँ पर कुछ impeller नहीं दिख रहा है, right? यहाँ पर, whereas in this one, we had an impeller. बराबर? सर तो लेयर टू लेयर कंपोजिशन चेंज होगा क्या? Yes. यहाँ पर मिक्सिंग कर रहे हैं इसलिए हमने impeller डाला, but in plug flow reactor we don't have an impeller. There is no mixing. ठीक है? There is no लेकिन सर mixing. जो सिंगल लेयर है उसमें कंपोजिशन सेम होगा क्या डिफरेंट होगा? We are assuming, when we say ideal, that's what we are assuming, कि ideal condition में it is going to remain same. We'll see later क्या होता है non-ideal reactors. That is in unit 6. Unit 6 में देखेंगे non-ideal reactor क्या होता है, कैसा होता है वो सब. But when we talk about different types of reactors, we always start with ideal. जैसे हमने थर्मो में start किया, we always start with ideal gas law, right? Thermo 2 में we started with Raoult's law.
So we always start with the ideal condition, then gradually build in non-ideality. So similarly in CRE also we always be talking about ideal batch reactor, ideal mixed flow reactor or CSTR, ideal plug flow reactor, and then in the end in unit 6 we'll talk about non-ideality हुआ तो कैसे करेंगे, how to handle that. Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? Okay, let's see now. Can you see this? Yes, sir. So this is an impeller. इसमें 3 impeller बताया है. यहाँ से फीड आ रहा है. 1 सोडियम फॉर्मेट, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, बाद में रिएक्शन हो रहा है इसका. And it forms formic acid. ठीक है. So what type of reactor is this now? CSTR. CSTR. बैच रिएक्टर है ना, बैच रिएक्टर. बैच रिएक्टर है. यहाँ पर इनपुट आउटपुट कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ऐड किया रिएक्टेंट और बाद में रिएक्शन हो गया. हाँ. Once you finish adding the reactant, there is no more addition of reactants and there is no removal of product also. So it's a batch reactor. And सर I said उन्होंने batch- क्या बोले? सर उन्होंने स्टार्टिंग में नो ब्लेंडिंग बोला, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? क्या बोला? नो ब्लेंडिंग बोला था सर उन्होंने स्टार्टिंग नो में. ब्लेंडिंग बोला था. नहीं, वो सी एक्चुअली क्या होता है ना, सी many of the industries, if you go to paint industry में क्या होता है, you just blending means mixing of different components, right? That is what they mean no blending. जैसे हम ब्लेंडर करते हैं घर में, मिक्सर रहता है, राइट? एक मिनट, बहुत आवाज आ रहा है. So like we do is use mixer at home. मिक्सर में क्या करते हैं हम, we add, जैसे मिक्स शेक बनाने का तो we add milk, we'll add some concentrate, we'll add something else, कुछ ऐड करके उसको मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, राइट? That's what it means. No blending means no reaction. So they don't do just blending, they do reactions. ये एक कंपनी का है, बट अच्छा एनिमेशन था इसलिए बताया मैंने. Essentially it is, if you look at it again, ये साफ कर रहा है. I want to see that. So you produce chemicals, that means chemical reaction, not blending. जैसे पेंट इंडस्ट्री में होता है, ब्लेंडिंग करते हैं, यहाँ पर नहीं. We design molecules with reaction करके करते हैं, molecules बनाते हैं. So is first adding formic acid, और बाद में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और बाद में बंद कर दिया. नो इनपुट नाउ, इज क्लोज नाउ एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस. कुछ टाइम लगेगा इसको, 5-10 मिनट 15 मिनट जितना भी रहेगा. फॉर्मिक एसिड बनेगा, उसके बाद बंद करेंगे, मिक्सिंग बंद करेंगे, इम्पेलर बंद करेंगे, एंड देन विड्रॉ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉटम. सो एसेंशियली इट्स अ बैच रिएक्टर. इसको खाली करके उसमें भेज दिया उधर, बाद में ये क्लीनिंग कर रहा है. देख लो क्लीनिंग में. ठीक है.
समझ में सर आया? थर्मोमीटर से समझेगा क्या या हाँ रिएक्शन कंप्लीट हुई या ना हुई? क्या? रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं हुई तो कैसे समझेगा बैच रिएक्टर में? बैच रिएक्टर में सी जनरली क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट थिंग, तो अपने को पता रहता है कितना टाइम उसको रिएक्ट करने को लगता है। तो बैच रिएक्टर में टाइम इज फिक्स्ड, जैसे कि 1 घंटा है या आधा घंटा है या 5 मिनट है या 10 मिनट जो भी है, उस टाइम के लिए करने का। और बाद में टेस्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको टेस्ट भी करते हैं कि फॉर्मिक एसिड कितना बना, टेस्ट करके निकलता है। आपको लेबोरेटरी में करते हो ना केमिस्ट्री में एनालिसिस, तो दे कैन डू एनालिसिस ऑल्सो कि ठीक है रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं हो गया। यस सर। Okay. Okay, so let's see this one now. आगे can you see this? Yes, it's Academy. हाँ सर दिख रहा है। Okay. Reactants and products flow in and flow out. यहाँ से रिएक्टेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ, यहाँ पर ये एक्चुअली गलत दिखाया है, नॉर्मली यहाँ से रहता है, बट ठीक है डज। बस इतना ही था, वेरी स्मॉल वीडियो, बट इसेंशियली वही बता रहा है। लेट्स टेक अनदर वन। Continuous stirred tank reactors are open systems that operate on a steady. See this? दिख रहा है क्या ये वीडियो? हाँ सर दिख रहा है। ओके, सो इसमें भी ऐसे ही दिखाया है, यहाँ पर इनपुट दिखाया ऊपर में और आउटपुट नीचे बताया। इट कैन बी दिस वे और इट कैन बी अदर वे अराउंड, ठीक है। A state basis. Reactants are continuously introduced into the reactor while products are continuously removed. CST are very well mixed, so the contents have relatively uniform properties like temperature, density, etc. throughout. Also, conditions in the reactor's exit stream are the same as inside the tank. ओके, ये भी छोटा सा ही था। सो एसेंशियली वही बता रहा है कि इनपुट है और कंटिन्यूस आउटपुट है। लेट्स सी अनदर वीडियो, एक और है, थोड़ा ये बड़ा है वीडियो और थोड़ा। 5 minutes to understand plug flow reactors. Chemists at a research center have made a new molecule in. Can you see this? यस सर। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ओके, हाँ सर। using a conical flask equipped with a magnetic stirrer. They now want to produce this molecule at industrial scale using a continuous mixed flow reactor. That is, a reactor which is fed continuously with a mixture of raw materials and with the continuous removal of the reaction products. Unfortunately, some molecules. ये करेक्ट बताया, यहाँ पर इनपुट आ रहा है और यहाँ से ऊपर से जाता है, बिकॉज दैट हेल्प्स मेंटेन द लेवल इन द रिएक्टर। नीचे से डाल निकाला ना तो लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, दैट इज वाई इनपुट इज ऑल्सो एट द टॉप एंड आउटपुट इज ऑल्सो एट द टॉप। Of the raw material have a very short residence time inside the reactor. Others spend a slightly longer time in the reactor before exiting, and yet others have an extremely long residence time. That's what is explaining. ये नॉन आइडियल रिएक्टर की बता रहा है कि ऐसा क्या होता है, व्हेन यू ऐड रिएक्टेंट एट द टॉप, some molecules will directly go from inlet to the outlet, so they'll spend very less time in the reactor. Some molecules will go in a different pattern, different flow pattern, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम रहेगा। और कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे घूमते रहते हैं, कॉर्नर में जो रहता है ना, पॉकेट्स बोलते, डेड पॉकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ अगर मॉलिक्यूल अटक गया तो अटक गया था, निकलता नहीं, बिकॉज मिक्सिंग जनरली यहाँ पर होता है ज़्यादा, बीच में, नीचे कॉर्नर्स में नहीं होता इतना एफिशिएंटली। सो इसीलिए कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स
spend less time in the reactor, कुछ spend more time, कुछ spend many more time, कुछ spend a lot of time. And that is non-ideal reactor. When we talk about ideal reactor, we assume कि every molecule spends same amount of time in the reactor. Okay? समझ में आ रहा है? Difference between ideal and non-ideal. समझा क्या difference between ideal and non-ideal? हाँ सर। सर तो फिर लेवल क्यों मेंटेन करना है? Level C, we always want to maintain a constant volume in the reactor, right? हमने जो देखा था definition of reaction rate, right? 1 upon V dNA by dt, right? So when we take V inside the derivative, it has to be constant. तो इसीलिए we always कहीं भी जाओ reaction volume constant ही maintain होता है, whether it is PFR or CSTR, because reactor is fixed. तो इसीलिए कांस्टेंट ही मेंटेन करते हैं, बिकॉज कम ज़्यादा होगा तो फ्लो रेट कम ज़्यादा होगा, राइट? इफ़ यू डोंट मेंटेन द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फ्लो रेट ऑल्सो विल कीप चेंजिंग, बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक हेड भी होता है उसका, राइट? अगर यहाँ पर मेरा लेवल कम हो गया तो यहाँ से फ्लो रेट भी नहीं होगा. सपोज आई हैव एन आउटलेट फ्रॉम हियर और मेरा लेवल नीचे आ गया तो आउटलेट ही नहीं आएगा. एंड दैट इज़ वाई वी कीप एन आउटलेट एट द सेम लेवल एज इनलेट और स्लाइटली below that or above that, so that we can maintain a constant level in the reactor. Okay, sir. Okay. In fact, in a continuous stirred tank reactor, or CSTR, the number of possible residence times is infinite. To illustrate this, one can draw a graph with the different possible residence times in the CSTR along the x-axis and their probability to occur on the y-axis. In other words, this graph shows the number of molecules exiting the reactor at each of the different times. It can be seen that there is a large number of molecules with a short residence time, a few number of molecules with a very long residence time, and बोला मैंने जो molecules जो ज़्यादा time spend कर रहे हैं, essentially they are in this corner dead pockets रहता है, यहाँ पर जाकर अटक जाता है, mixing बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए some of the molecules will get stuck there. बाकी otherwise you'll have some molecules which will spend lot of time, more time, some less time, थोड़ा बहुत change होगा because वहाँ पर mixing बराबर नहीं हो रहा है. And this is what we'll see in unit 6. Unit 6 का हमारा weekly है, but ये वीडियो में बताया तो ठीक है, I wanted to show you. many molecules with residence times in between both extremes. The resulting curve has the shape of a decreasing exponential function. Let's return to the industrial scale stirred tank reactor. Another problem is that the concentration of the reactant is uniform throughout the reactor, since the reactor is stirred continuously. And this concentration is low because it corresponds to the concentration at the outlet of the reactor. However, the reaction rate is usually proportional to the reactant concentration. Hence, in a stirred tank reactor, the reaction rate is low throughout the entire volume of the reactor, and this results in a low production of the molecule of interest. In order to overcome this, we can design a reactor without a stirrer so that zones with different degrees of concentration exist. The reactant concentration will remain low close to the reactor outlet, but it will increase as you move towards the reactor inlet, and therefore the reaction rate will also increase towards the inlet. In addition, if the length of the reactor is increased, the residence time of the reactive molecules will also increase, giving them time to be transformed into the desired molecule. This was how the tubular reactor was invented. The corresponding ideal reactor is generally called a plug flow reactor. So, what is the explanation? In a tubular reactor, all the molecules move through it at roughly the same speed. You can imagine a piston that moves forward inside the reactor at a constant speed, pushing the fluid. The molecules that are located in a small section of this reactor are hardly mixed with the molecules just behind them or just in front of them. This type of behavior does not actually exist in reality, but we can get quite close to it.
The plug flow reactor is an ideal reactor, which is used as a guideline for the design of industrial tubular reactors. Let's imagine the injection of a non-reactive tracer at the inlet of the reactor in the form of a pulse input, which means that the amount of tracer is injected instantaneously. If a probe is placed at the outlet of the reactor, we will be able to follow tracer concentration. Essentially क्या कर रहा है यहाँ पर injection दे रहा है. Tracer means is another compound which can be easily analyzed or detected. It can be a color dye भी रहता है. Dye डाल दिया पानी का, अगर पानी कर रहे हैं flow, suppose and you put a red dye, you can easily see the color fading. ऐसा जो pattern होता है ना वैसा fade होते जाते हैं. यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा. And that's what is showing now. Tracer concentration की tracer का concentration क्या रहेगा along the length of the reactor. At the outlet as a function of time. If the reactor is a perfect plug flow reactor, the exit signal will have this shape. We can see the pulse input corresponding to the injection of the tracer, which is just shifted in time. All of the molecules have the same residence time, which is the time measured between the injection of the tracer and the peak observed at the exit. We can understand intuitively that this time also corresponds to the ratio between the reactor volume and the volumetric flow rate. This is also called the space-time. In a CSDR, on the other hand, the residence time distribution decreases exponentially with time. A large amount of tracer exits the reactor after a short time, after which less and less tracer is detected at the outlet. However, this wide distribution of residence times in the CSDR has an adverse effect on the production of the desired molecule. In fact, it is preferable to use a reactor in which the residence time distribution is narrow. That is, where all the molecules exit the reactor at the same time, like in the plug flow reactor. Sometimes, a plug flow reactor cannot be used in industry due to technical constraints. In this case, similar conditions can be achieved by connecting several CSTRs in series so that the exit stream of one reactor is the feed stream of the next reactor. So this is what you'll see in I think unit 4. If you combine infinite number of CSTRs in series, it becomes like a plug flow reactor. जितने ज़्यादा CSTR combine करेंगे, suppose we put 10 CSTRs in series, it becomes like a one plug flow reactor. In series so that the exit stream of one reactor is the feed stream of the next reactor. In reality, in a tubular reactor, there is a deviation from ideal plug flow, which manifests itself as axial dispersion. When the tracer pulse input is injected at the inlet of the reactor, the tracer has the tendency to spread over the length of the tube. This can be seen in the following movie. The pink-coloured tracer spreads over a small zone in the packed tubular reactor. As the tracer moves through the reactor, it spreads out more and more. When the tracer approaches the reactor outlet, we can monitor its concentration using, for example, a conductor meter. It can be seen that the tracer concentration increases rapidly at first, but not instantaneously like in an ideal reactor. The concentration then decreases more or less slowly, depending on how much axial dispersion there is in a reactor. This decrease in concentration is not at all instantaneous as it would be in an ideal plug flow reactor. However, it is faster than that observed in a perfectly mixed CSTR. The operation of this type of non-ideal tubular reactor can be represented with the axial dispersion model. For other types of industrial reactors, a model associating perfectly mixed CSTRs and plug flow reactors can be used to represent the hydrodynamics in a real reactor. Combinations of tubular reactors and CSTRs offer many potentially interesting possibilities for industrial production. Okay, so this was actually covering almost all the units up now. But understanding the difference between CSTR and PFR, we'll see the rest of them dhire dhire. We'll cover all of it gradually. So let's get back. Anybody has any questions before we proceed?
सर हम इंडस्ट्री में पीएफआर क्यों नहीं यूज कर सकते? PFR ही यूज होता है मोस्टली कंटिन्यूस इंडस्ट्री में. You go to any petrochemical plant और पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह PFR ही यूज होते हैं जनरली. तो उन्होंने वीडियो Hmm? में बोला ना कि पीएफआर यूज करना बहुत क्या हो गया. Yeah, there may be constraints. So you'll see that all those things. See, it all depends on the reaction. It depends on the reactor volume. So many factors are there. Right now, just understand that there are different types of reactors, and we'll see all those things later on. Okay? यस सर. Okay. So you have seen all the types of reactors. वगैरह वगैरह हो गया. Let's see now. Rate equation. Right? So it characterizes rate of reaction. Form suggested by theoretical considerations. This is only in which case? थ्योरी कौन बता. रेट इक्वेशन कहाँ से थ्योरी में किस टाइप के रिएक्शन के लिए मिलता है? For which type of reactions we can write rate equation from theory? एलिमेंट्री रिएक्शन. Elementary reactions. Mostly it is result of curve fitting or laboratory studies. Okay. The value of the rate constants only found by experiments. Predictive methods are not really good. So determinant rate equation is two-step procedure. First, we need to find concentration dependence, that means order of reaction. Right? And temperature dependency कैसे आता है? How do you get temperature dependency of rate constant or rate of rate equation? Activation energies, right? K naught and activation energy. K naught तो constant है, but वो भी निकालना पड़ता है. So if you look at rate equation, minus R is equal to minus 1 upon V dNA by dt is equal to K naught e raised to minus E by RT C a raised to Rn. So N निकालना पड़ता है. You need to find N, you need to find E, and you need to find K naught. So we can obtain this by batch reactor or flow reactor, both आपके एक्सपेरिमेंट में आएंगे. So batch reactor में what you do is determine the extent of reaction or conversion by following the concentration of a component. It means in batch reactor क्या रहेगा अपने लैब में? What is the batch reactor in lab? लैब का बैच रिएक्टर पता है आप लोगों को क्या होता है? किसमें कर सकते हैं रिएक्शन? सर फ्लास्क. फ्लास्क बोलो, बीकर बोलो, एनीथिंग. रिएक्टर भी रहता है, राउंड बॉटम फ्लास्क भी रहता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स. सो फॉलो द कंपोनेंट्स. एसेंशियली क्या हो जाएगा? यू मिक्स द रिएक्टर, जैसे उसने बताया, राइट? यू फिक्स व्हाट? सोडियम फॉर्मेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. मिक्स करने के बाद यू टेक सैंपल आफ्टर 1 मिनट, then after 5 minutes, then after 10 minutes, then after 15 minutes, then after 20 minutes, and analyze it कि कितना reaction हो गया. So that is following the concentration of component with time. Essentially time से बात कैसे change हो रहा है. सैंपल निकाला, उसके बाद में एनालाइज करना रहता है. यू कैन डू दैट बाय फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. लाइक कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं सैंपल जो लिया हमने. इफ आई टेक सैंपल एट 1 minute, 5 minute, 10 minute and measure conductivity, can it give me concentration?
क्या कंडक्टिविटी से कॉन्सेंट्रेशन मिलता है क्या? व्हाट डज कंडक्टिविटी मेजर? ये बेसिक चीज़ है, ये नथिंग टू डू विद CRE। बट कंडक्टिविटी आपको पता है क्या होता है? ये पता है किसी को? वो हाँ, पर ओम्स में होता है। किसमें होता है? व्हाट इज कंडक्टिविटी? सर वो 1 अपॉन रेजिस्टेंस बोल रहा है। कंडक्टिविटी क्या मेजर करता है? व्हाट डज इट मेजर? when you say conductivity, what is it measuring? मतलब करंट कितना इजीली फ्लो हो रहा है। राइट, एसेंशियली करंट कितना पास हो रहा है, बराबर ना? और करंट कब पास होगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस की बात जब कौन? वोल्टेज जनरेट होगा। करंट कैसे पास होता है सॉल्यूशन में? जब सर्किट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन्स? ओके, करंट इज इलेक्ट्रॉन्स, ओके आई एग्री। तो लेकिन करंट कैसे पास होगा? इफ आई टेक एन ऑर्गेनिक लिक्विड, सपोज आई टेक बेंजीन, उसमें करंट पास होगा क्या? नो सर, क्यों? क्योंकि आयंस जनरेट नहीं हो रहे उसमें। आयंस जनरेट नहीं हो रहा है, राइट? किसमें आयंस जनरेट होगा? कौन सी सॉल्यूशन में आयंस जनरेट? कॉपर अगर लिया तो कॉपर, नॉट जस्ट कॉपर। कॉपर क्या क्या? व्हाट? कॉपर तो प्योर नहीं डालो, प्योर तो कॉपर सॉलिड रहता है, राइट? कॉपर सल्फेट हाँ, और आयंस जिंक। बेसिकली आयनिक लिक्विड लिया। इफ आई टेक सल्फ्यूरिक एसिड, इफ आई टेक HCl, इफ आई टेक NaOH, आयंस जनरेट होगा। ये बेसिक चीज़ है आपका। if I take a solution of NaOH, आई कैन मेजर द कंडक्टिविटी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उतना कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा उतना कंडक्टिविटी कम रहेगा। तो मैंने मेजर दैट कंडक्टिविटी कैन टेल मी कॉन्सेंट्रेशन कितना है NaOH का। ओके, देन अगर फॉलो चेंज इन प्रेशर इन कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर लिया हमने बॉम लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम बोला, या रिएक्टर लिया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसमें प्रेशर चेंज विल इंडिकेट कि कितना रिएक्शन हो गया, और change in volume of constant pressure system. So there are different ways of measuring concentration or reaction progress. So what we do is we normally operate experimental batch reactor at constant temperature and constant volume, right? And use it to calculate reaction or measure the reaction kitna hua hai. And this is easy to use, easy to interpret result. That's why we use batch reactor. And batch reactor is mostly used for homogeneous reactions, whereas flow reactor is used for heterogeneous reactions. This is generally what is done. And what we do normally in the lab is homogeneous reactions, CRE1 mein. So we'll use batch reactor in the lab. So there are two procedures for analyzing kinetic data. One is integral method, second is differential method, and we'll see this next time. ठीक है? Any questions?